अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सीखोज लेसन्स ऑन फिजिक्स। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है काइनेमैटिक्स। सब टॉपिक्स आर स्केलर्स एंड वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्केलर और वेक्टर होते क्या हैं। तो a scalar quantity is one that has only magnitude and no direction. An example of a scalar quantity can be distance and speed. Further on in the lecture, we will also be discussing what distance speeds are. लेकिन अभी आप ये example note करते हैं. A vector quantity is a quantity that has both magnitude and a direction. तो magnitude size भी हो सकता है of the vector quantity. Example of a vector quantity can be velocity, and a very common example is force. अब एक example देखते हैं. For example, a person A goes on to a hike from spot X. This is person A and he is traveling from a spot X and he goes to spot Y, which is over here. तो जितना भी रास्ता ये travel करेगा, that would be his distance and this would be his displacement. अब ये बड़ी अजीब सी assumption है जो हम इधर कर रहे हैं और मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया तो ये बहुत अजीब लग सकती है आप लोगों को, लेकिन इसके पीछे एक फिलॉसफी है। वो ये है कि डिस्टेंस, जैसे कि हमने पहले कहा, एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शन। ठीक है, सो द ओवरऑल एरिया that he has covered on foot would be his distance. However, the point that the person changes his direction, his displacement would become zero. वो दोबारा से अपनी displacement start करोगा. Why? Because displacement is a vector quantity. It has a direction. So इन दोनों की formal definitions discuss करते हैं. So we can put it down in our notes. Distance is a scalar quantity. ये बात हमने discuss कर ली. Why? Because it describes how an object has traveled overall, but not in a fixed direction. और जो displacement है वो एक vector quantity. The total length between point A and point B, these can be any 2 points, is called the distance because it has no direction. Whereas the distance on an object from a fixed point, the shortest distance भी आप कह सकते हैं, the distance of an object from a fixed point is called the displacement in a specific direction. ये बात बहुत important है. Specific direction would be the displacement of that object. ठीक हो गया? Now let's look at some common examples of vectors and scalars. So ये बहुत common exam question होता है. They would give you a list of some values and they would ask you if this is a scalar or a vector. Displacement, जो कि हम discuss कर चुके हैं. Why? Because it has a direction. So anything that has a direction would be a vector. Velocity, force, acceleration, and momentum. Let's not talk about momentum right now. उसको हम बाद में discuss करेंगे. So as you know, distance हो गया, speed हो गई. Speed और velocity का भी जो difference है वो discuss करेंगे. Basically it's just the difference between their
one has direction, one does not have direction. mass की हम बात कर सकते हैं, mass हो गया, time हो गया, energy. काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, एनर्जी इज वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, और ये चीज नोट करने वाली कि इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. टेम्परेचर, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वेक्टर्स एक्चुअली आर एंड हाउ वी रिप्रेजेंट देम. तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू एरोज, आर represented by arrows, represented by arrows. So इस तरह का एरो होगा. The direction that this point is pointing towards would be the direction of the vector, and the size of the arrow would represent the magnitude of the vector. ठीक हो गया. तो अब vectors can be added and they can be subtracted. So for example, एक बॉक्स है और उसके ऊपर दो तरफ से फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है. आपको ये जानना है कि बॉक्स किस तरफ जाएगा, तो आपको बताएंगे इस तरफ 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, इस तरफ 2 न्यूटन फोर्स लग रही है. सिंपल है. आप 5 - 2 करेंगे, आपके पास 3 न्यूटन आएगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन. सो यू वुड नो दैट द बॉक्स वुड गो लेफ्ट. हाउएवर, बट इफ यू हैड in space a vector A like this and a vector B going down, अब ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, तो अगर आपको कोई कहे कि इनको ऐड करें तो how would you do that? That's what we're going to look at. There are two methods. We're going to look at both. One is the head to tail method, head to tail, and the other is the parallelogram method. ठीक है? The parallelogram method. So first, let's look at the head to tail method. This is a vector A and this is a vector B. Now, अब अगर हमने इनको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसकी टेल को A की हेड के साथ ज्वाइन कर देंगे, हेड टू टेल, and then we would draw a line from the tail of A to the head of B. Let's call it C. C would be the resultant vector of A plus B. तो अगर इनका ऐड करना है, for example, this was 5 Newton, this was 3 Newton, this becomes a right angle triangle. आप Pythagoras theorem को यूज करके easily C का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी हमें पता चल जाएगी. अच्छा, अब what if A इस तरह है और B इस तरह है. अब इन दोनों की टेल्स आपस में मैच हो रही हैं, तो आप इसको उठाकर उधर रखेंगे तो ये अजीब सी चीज हो जाएगी. इधर यूजफुल होगा हमारा पैरेललोग्राम मेथड. ठीक है, वो इस तरह कि दिस इज ए, दिस इज बी, हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ए का ए के पैरेलल, बी का बी के पैरेलल. ठीक है, लेट्स कॉल देम इस तरह. Or then what you need to do is join the diagonals. So what you're basically doing is इस B को आप उठाकर इधर रख रहे हैं and then joining the diagonals. Let's call this C. This C would again be the resultant vector. So this is how you join vectors. और इस तरह parallelogram और head tail method use हो सकता है. Now, subtraction of vectors. Subtraction. Let's suppose this is vector A and this is vector B. पहले vector B इस direction में जा रहा है, लेकिन अब vector the vector B is still in this direction. तो अब अगर वो आपको कहता है कि give me the answer of A minus B and let's call it C, तो हम क्या करेंगे, we would do the same thing, join the head to the tail of B but in the opposite direction. अब एक चीज अगर राइट जा रही है तो हम उसको पॉजिटिव कन्वेंशन में सपोज करते हैं, लेफ्ट जा रही है, तो फिर ऑब्वियसली अगर हम एक्स वाई एक्सिस को भी देखते हैं, हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, उसको नेगेटिव लेते हैं, जो भी आप कन्वेंशन रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं. तो अगर एक डायरेक्शन में आप उसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो जब उसको दूसरी डायरेक्शन में लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा. सो वी डू दिस, वी जॉइन देम, और फिर हम वही करेंगे हेड टू टेल मेथड, एंड दिस वी वुड कॉल C. C is equals to A minus B, and this is how you subtract vectors.
Now let's talk about resolving vectors. और resolving vectors होती क्या? I'm sure आपके लिए एक नई चीज होगी, आपने शायद पहले कभी नाम भी ना सुना हो. Vectors resolving इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है. It's simple mathematics and trigonometry. Let's suppose this is an axis. We have x here and we have y here. Resolving vector, resolving is equals to breaking down the vector into its components. Breaking it down into its components. अब components क्या होते हैं भाई? जब हम 2D स्पेस में बात करते हैं तो एक वेक्टर के इस एरो के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इन द x डायरेक्शन, वन इन द y डायरेक्शन. So let's suppose if this is a vector f and it has an angle theta with the x axis, तो इसका एक वेक्टर x डायरेक्शन में होगा और एक y डायरेक्शन में होगा. What if someone asked you कि मुझे f का x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बताएं, तो आप क्या करेंगे? If this is 5 न्यूटन अगेन, आप क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास रिजॉल्विंग की टेक्निक्स आती हैं. हम इसको एक्सट्रैपोलेट करके इधर ले आते हैं, which is y. The axis that is touching the angle would be the cos component of the vector. ठीक है? So let's call this f of x and let's call this f of y. In our case, f of x would just be f cos of theta. Let's suppose theta is equals to 30 degrees and f is equals to 5 newtons. This component would be f cos 30 और आपके पास magnitude आ जाएगा. fy in this case would be f sin of 30. तो ये चीज आपने याद रखनी है. फॉर एग्जाम्पल अगर एंगल इधर बन रहा होता है अल्फा और आपने अल्फा के रिस्पेक्ट इनको break down करना होता, we should remember कि the axis that is touching the angle would be always be the cos component. So अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट करें तो fy would be f cos alpha and fx would be f sin of alpha. That's all for this lecture and I'll see you in the next lesson.